This is his younger brother, Shyam Chandra. Right? Yeah. Very nice.
His Divine Grace, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki jai. Ananta Gauri Vaishnava Vrinda ki jai. Naam Charge Srila Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Mathura Dham ki jai. Mayapur Navadvip Dham ki jai. Gangamai Jamunamai ki jai. Tulsi Maharani Bhakti Devi ki jai. Sambhaveda Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaura Premanande. So today we're reading from first canto of Srimad Bhagavatam, chapter 5, text number 18. This is a very well-known shloka. I'm waiting for translator though, so just now coming. I need a translator. Please repeat Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nasna Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Yuttamasloke Bhakti Bhavati Naishtiki. Please repeat. I'll do one sentence at a time. Tasyaiva heto prayate kovido. Nalabhyate yad brahmatam uparyadaha. Tolabhyate dukhavadanyat sukam. Kalena sarvat
yad brahmatam uparyadaha talabhyate dukkhavaranyat sukam kalena sarvatra gavira ramasa tasyaiva heto prayateta kovido nalabhyate yad brahmatam uparyadaha talabhyate dukkhavaranyat sukam kalena sarvatra gavira ramasa tasyaiva heto prayateta kovido nalabhyate yad brahmatam uparyadaha talabhyate dukkhavaranyat sukam kalena sarvatra gavira ramasa tasyaiva heto prayateta kovido nalabhyate yad brahmatam uparyadaha nalabhyate dukkhavaranyat sukam kalena sarvatra gavira ramasa tasyaiva heto prayateta kovido nalabhyate yad brahmatam uparyadaha nalabhyate dukkhavaranyat sukam kalena sarvatra gavira ramasa. Ladies, tasyaiva heto prayateta kovido nalabhyate yad brahmatam uparyadaha nalabhyate dukkhavaranyat sukam kalena sarvatra gavira ramasa tasyaiva heto prayateta kovido nalabhyate yad brahmatam uparyadaha talabhyate dukkhavaranyat sukam kalena sarvatra gavira ramasa. So Prabhuji, you'll translate? Thank you. So I think almost everyone knows Hindi, correct? Why don't you just go through the word meanings and the translation and the purport, and then I'll speak after that. Okay? शब्दार्थ तस्य उसी एव केवल हेतो कारण का प्रयतेत प्रयत्न करना चाहिए कोविदः आध्यात्मिक रूप से प्रवृत्त न नहीं लभ्यते मिलता है यत् जो भ्रमताम विचरण करते हुए ऊपरी अधः ऊपर से नीचे तक तक वह लभ्यते प्राप्त किया जा सकता है दुखवत दुखों के समान अन्यथा पूर्व कर्म के कारण सुखम इंद्रिय भोग
कालेन समय के साथ सर्वत्र सभी जगह गंभीर सूक्ष्म रमसा उन्नति प्रगति। अनुवाद: जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। कृपया देखिए सुनिए। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं। तात्पर्य: प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थान में विभिन्न प्रयासों से अधिक इंद्रिय भोग पाना चाहता है। कुछ मनुष्य व्यापार, उद्योग, आर्थिक विकास, राजनीतिक श्रेष्ठता आदि में लगे हुए हैं, तो कुछ लोग सकाम कर्मों में निरत हैं, जिससे अगले जन्म में वे उच्चतर लोकों में जाकर सुख भोग सकें। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के निवासी सोम रस पीकर अधिक इंद्रिय भोग करने में समर्थ हैं और उत्तम उपकारी कार्य पुण्य करने से पितृलोक की प्राप्ति होती है। इंद्रिय भोग के लिए इस जीवन में या मृत्यु के बाद अगले जीवन में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कुछ लोग मशीनों की व्यवस्था के द्वारा चंद्रमा या अन्य लोकों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वे बिना पुण्य कार्य किए ही इन लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। परमेश्वर के नियम के अनुसार विभिन्न कोटि के जीवों को उनके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार ही उन्हें विभिन्न लोकों की प्राप्ति हो सकती है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, केवल पुण्य कर्म से ही मनुष्य का जन्म अच्छे कुल में हो सकता है और उसे ऐश्वर्य, उत्तम शिक्षा तथा अच्छा स्वरूप प्राप्त हो सकता है। हम यह भी देखते हैं कि इस जन्म में भी उत्तम कर्म से ही मनुष्य को अच्छी शिक्षा या संपत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार हमें उत्तम कर्म के द्वारा ही अगले जन्म में मनवांछित कर्म प्राप्त होते हैं। अन्यथा ऐसा ना होता कि दो व्यक्ति एक ही समय तथा एक ही स्थान में उत्पन्न होकर भिन्न भिन्न पद पाते हैं। यह पूर्व कर्म के कारण है। लेकिन ऐसे सारे भौतिक पद अस्थायी हैं। यहाँ तक कि सर्वोच्च ब्रह्मलोक तथा निम्नतम पाताल में भी ये पद हमारे कर्मों के अनुसार बदलते रहते हैं। दार्शनिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे परिवर्तनशील पदों के लोभ में ना आए। उसे आनंद तथा ज्ञान का स्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उसे पुनः इस कष्टप्रद भौतिक जगत में या अन्य किसी लोक में फिर से ना लौटना पड़े। दुख तथा मिश्रित सुख इस भौतिक जीवन के दो लक्षण हैं और ये दोनों ही ब्रह्मलोक तथा अन्य लोकों में भी पाए जाते हैं। ये देवताओं के जीवन में भी पाए जाते हैं और ऊपर सूकर के जीवन में भी। समस्त जीवों के दुखों तथा सुखों में गुण तथा परिमाण का अंतर रहता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से मुक्त हो। इसी प्रकार सबका सुख भी नियत है। कोई चाहे कितना प्रयास करना करे, किसी को ये वस्तुएं ना तो कम ना ही अधिक मिलेगी। यदि मिल भी जाए तो ये पुनः चली जाएंगी। अतएव मनुष्य को इन व्यर्थ की वस्तुओं में समय नहीं गंवाना चाहिए। उसे तो केवल भगवान के पास वापस जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।
Magina Tamarandasya Yananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Jaina Tasmai Sri Guruve Namah. I was born in the darkest ignorance. My spiritual master opened my eyes with the torch of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. मैं ज्ञान के अधिकार में प्राप्त हुआ था और मेरे आध्यात्मिक गुरु ने ज्ञान के प्रकाश के द्वारा मुझे लाभान्वित किया। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। So in this chapter, chapter 5, Narada was a little bit chastising Srila Vyasadeva for not properly glorifying Lord Krishna. तो इस पंचम अध्याय में नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव को थोड़ा डांट रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने भगवान को अच्छे से प्रशंसित नहीं किया है। Most materialistic people are simply chasing after sense gratification. जो भौतिकता वाले लोग हैं वो केवल इंद्रिय भोग के पीछे भाग रहे हैं। And Srila Vyasadeva had promoted some things within the Shastra that encouraged people to try to enjoy nicely. और श्री व्यासदेव ने शास्त्र के अंदर कुछ ऐसी वस्तुओं को रखा जिससे कि लोगों को इंद्रिय भोग करने के लिए अनुमोदन प्राप्त हो सके। But Narada Muni was so smart, he understood that it requires great intelligence in terms of who is the supreme being. तो नारद मुनि बहुत बुद्धिमान थे और उनको पता था कि किसी व्यक्ति को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में जानने के लिए बहुत बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। And Srila Vyasadeva, then he felt bad about himself for not having glorified Krishna properly. तो उसके बाद श्री व्यासदेव को खराब लग रहा था कि उन्होंने भगवान कृष्ण को पूरी तरह से प्रशंसित क्यों नहीं किया। So therefore, Narada instructed him, you go back and you glorify Krishna through this Srimad Bhagavatam, this wonderful transcendental literature. तो फिर नारद मुनि ने व्यासदेव से बोला कि आप भगवान कृष्ण को प्रशंसित करने के लिए ये दिव्य श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का फिर से निर्माण करें। Srila Prabhupada has said that intelligence means one should analyze things in the proper perspective. श्री प्रभुपाद कहते हैं कि बुद्धिमत्ता का मतलब है कि वस्तुओं को हमें सही अवस्था में सही ढंग से परीक्षण करना चाहिए। Without analyzing properly, one will deceive himself, and Maya will simply cause all kinds of destruction for the jivas in the material world. यदि हम वस्तुओं का ठीक तरीके से परीक्षण नहीं करेंगे तो हम माया के द्वारा स्वयं भ्रमित हो जाएंगे और हम माया के द्वारा इस तरह से कार्य करेंगे जो इस संसार के लिए अच्छा नहीं। Therefore, intelligence is most important so that we don't be cheated by the material nature. इसलिए बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है जिससे कि हम भौतिक संसार के द्वारा जीवित नहीं हों। Prabhupada is saying in the very last line, one should not therefore waste time with all of these flimsy things. इसलिए प्रभुपाद इस तात्पर्य के अंतिम पंक्ति में लिख रहे हैं किसी व्यक्ति को इन अस्थायी वस्तुओं के बीच में समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। One should only endeavor व्यक्ति को केवल उतना ही प्रयास करना चाहिए to go back to Godhead. कि वो भगवत धाम जा सके। That should be the mission of everyone's life. ये सभी के जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। So I do some studying sometimes on Prabhupada's lectures. तो मैं कई बार श्री प्रभुपाद जी के जो प्रवचन है उसको मैं पढ़ता हूँ। And I look for things that Prabhupada is preaching about, and I take some segments out. Not the whole lecture, but some portion I take out and I write them on my notepad. और प्रभुपाद जी के प्रवचनों में से मैं देखता हूँ कि प्रभुपाद किस तरह से प्रचार कर रहे हैं और उसमें से कुछ प्रवचन का कुछ हिस्सा में जो मुझे जो मुझे पसंद आता है उसको मैं अपने पास लिख के रखता हूँ। So in 1969, in June 22nd, 1969, Srila Prabhupada was giving a lecture in New Vrindavan in USA. 22 जून 1969 को श्री प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन अमेरिका में एक प्रवचन दे रहे थे। And Prabhupada was speaking on this sloka,
1:5:18. और श्री प्रभुपाद इस श्लोक के ऊपर प्रवचन कर रहे थे। So I have some nice things I want to share with you that Prabhupada said. तो मेरे पास कुछ अच्छी वस्तुएं हैं, बातें हैं जो कि श्री प्रभुपाद ने बताई थी और वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। So Prabhupada says, so he's speaking about Bilva Mangala. Bilva Mangala was a great devotee, but he got himself in some trouble for material gratification, and then he had to purify himself. तो इस प्रवचन में प्रभुपाद बिल्व मंगल ठाकुर के बारे में बता रहे हैं। बिल्व मंगल ठाकुर भगवान के एक बहुत बड़े भक्त थे और कुछ अस्थायी समय के लिए कारणों में वो बहुत एक इंद्रिय भोग में थे और उसके बाद वो पूरी तरह से मुक्त हो जाते। So Prabhupada says, so Bilva Mangala was performing Shraddha ceremony for his father. श्री प्रभुपाद कहते हैं कि बिल्व मंगल ठाकुर अपने पिता का श्राद्ध मना रहे थे। But he had a girlfriend, a prostitute. परंतु उसकी एक वैश्या के साथ मित्रता थी। So he wanted to go to see her very quickly. तो बिल्व मंगल उस वैश्या के पास बहुत जल्दी जाने के लिए बहुत जल्दी उत्सुक थे। So somehow or other, he finished the ceremony, his father's ceremony. कैसे भी करके उन्होंने इस श्राद्ध को जल्दी से खत्म किया। And he wanted to go see her. और वो उस वैश्या को देखने जाना चाहते थे। But on the road he found that the raining was very heavy. तो जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है। And he had to cross the river, but the water was going so fast. और उनको नदी को पार करके जाना था, परंतु नदी में पानी बहुत तेज बहाव से जा रहा था। But somehow or other he managed to cross the river to go to this girlfriend, this prostitute. तो कैसे भी करके उन्होंने उस नदी को पार किया और उस अपनी वैश्या के पास चले गए। And this prostitute was in her home, and she was thinking, this is how does it say? She thought that Bilva Mangala is not coming because it is too much rain and he's not going to be able to get here. तो वो वैसे अपने घर में थी और सोच रही थी कि बिल्व मंगल तो अभी नहीं आएगा क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, तो वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। So then, all of a sudden, she was very surprised because Bilva Mangala was standing outside in front of her door. तो एकाएक वो बहुत चकित हो गई क्योंकि बिल्व मंगल ठाकुर उसके घर के बाहर खड़े हुए थे। And she was actually astonished how he has come with all this rain and all of these rivers. और बहुत आश्चर्यचकित हो गई ये देख के क्योंकि उसको लगा कि कितना बारिश और इतने बहाव के बाद भी वो यहाँ पे कैसे आ गए। So she gently chastised Bilva Mangala. तो उसने बिल्व मंगल ठाकुर को डांटा। Bilva Mangala, how did you come here in these torrents of rain? How have you been able to come? बिल्व मंगल, इस इतनी बारिश होते हुए भी तुम यहाँ पे कैसे आ गए? So then he disclosed to her. He told her what had happened. तो उसने बिल्व मंगल ने फिर उसको बताया कि क्या क्या हुआ। He said he talked to her that so he said that everything now he caught one dead body in the river. He was trying to cross the river and some dead body was floating, so he was holding on to this dead body to try to cross. तो उसने बताया कि उनको एक मृत शरीर नदी में तैरता हुआ मिला और उस मरे हुए शरीर को पकड़ के उन्होंने कैसे भी नदी को पार कर दिया। Somehow he got to the other side. कैसे भी करके वो नदी के दूसरी तरफ पहुंच गए। And then he had to jump over some tall wall. उसके बाद उनको एक बहुत ऊंची दीवार को भी पार करना पड़ा। Because this prostitute's home was on the other side of that tall wall, so he had to climb real high and jump down and go to see her. क्योंकि उस वैश्या का जो घर था उस दीवार के दूसरी तरफ था, तो उससे मिलने के लिए दीवार पार करना पड़ा। So she was astonished. तो वो वैश्या बहुत आश्चर्यचकित थी। And she said to him something very important. She said something very important right to Bilva Mangala's face. तो उसने बिल्व मंगल ठाकुर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। She said, "Oh, Bilva Mangala, this much affection you have for me. If you would have that feeling of affection for Krishna, how you would have been such
nice devotee. उसने बोला कि तुम्हारा मेरे प्रति इतना प्रेम और स्नेह है, यदि इतना प्रेम स्नेह तुम्हारा भगवान कृष्ण के प्रति होता तो तुम बहुत ही अच्छे भक्त बन चुके होते। She told him, your life would have been so nice. उस अवस्था में तुम्हारा जीवन बहुत ही अच्छा होता। Then Bilbo Mangala, listening to what she said, he realized, oh, what a fool I am. जब बिल्बो मंगल ने ये सुना कि वो क्या बता रही है, तो उसने सोचा कि हाँ ये सच है, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। So Bilbo Mangala is standing there, he's stunned by what he heard from that prostitute, and he goes, oh, Krishna! तो वो वहीं पे खड़े थे और बहुत उनके ऊपर प्रभाव हुआ उस वैश्या ने जो बताया, तो एकाएक वो कृष्ण का नाम लेने लगे। So immediately, Bilbo Mangala left everything and went straight to Vrindavan Dham. उसी समय बिल्बो मंगल ने सब कुछ छोड़ दिया और सीधे वृंदावन धाम चले गए। So Prabhupada says, so Krishna is so nice. तो प्रभुपाद जी फिर बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण कितने अच्छे हैं। Prabhupada said, just at the right time, Krishna will remind the devotee who is having some trouble. Krishna will remind him, encourage him. तो एकदम सही समय पे भगवान कृष्ण किसी भक्त को बताएंगे और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे जब उस भक्त को उसकी आवश्यकता होगी। And then Prabhupada gives a nice sloka from Bhagavad Gita. उसके बाद श्री प्रभुपाद भगवद गीता में से एक श्लोक बताते हैं। Bhagavad Gita 6:43. भगवद गीता 6वें अध्याय का 43वां श्लोक। Yatate cha tato bhuya samsido gurunandana. And now the translation. On taking such a birth, he revives the divine consciousness of his previous life, and he again tries to make further progress in order to achieve complete success, O son of Kuru. हे पार्थ, कोई व्यक्ति जब वो योगी दूसरे जन्म में जन्म लेता है तो भगवान की कृपा से उसको उसके पिछले जन्म की स्मृति वापस आ जाती है और फिर से वो भगवान की दिव्य भक्ति में लग जाता है, जिससे उसका जीवन सफल हो जाता है। So, Bilbo Mangala got some good understanding from this prostitute, and he went to Krishna. तो बिल्बो मंगल ठाकुर को इस वैश्या के द्वारा कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला और फिर वो कृष्ण के पास चले गए। He was previously accustomed. It means he was previously accustomed, so he was immediately reminded. Means he was doing the wrong thing, but Krishna in his heart, in his mind, he encouraged Bilbo Mangala. तो बिल्बो मंगल ठाकुर जब ये गलत कार्य कर रहे थे तब कृष्ण ने उनके मन, उनके बुद्धि के द्वारा उनको ये प्रेरणा प्रदान की। So Prabhupada says, so these are the, I mean to say, the facilities for Krishna consciousness. तो ये कृष्ण भावनामृत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सुविधाएं हैं। Because we all know sometimes fall down will come. हम सबको पता है कि किसी न किसी समय को पतन हो सकता है। We have all seen in ISKCON, all over the planet. Sometimes people join Hare Krishna and then they fall down to Maya. हमने ISKCON में देखा है पूरे संसार में कि लोग ISKCON संस्था में आते हैं परंतु कुछ समय बाद फिर से वो माया में वापस चले जाते हैं। Even our so-called big devotees, sometimes they fall down. हमारे ऐसे बहुत बड़े-बड़े भक्त जो हैं उनका भी कई बार पतन हो जाता है। But because within the heart they still have feeling of love for Krishna, many of them come back. परंतु क्योंकि उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और भाव तब भी रहता है, इसलिए उनमें से कई वापस आ जाते हैं। So that is why Bilbo Mangala went to Vrindavan. He wanted to revive his love for Krishna. इसीलिए बिल्बो मंगल ठाकुर वृंदावन चले जाते हैं क्योंकि वो भगवान कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को पुनर्जागृत करना चाहते थे। So he was very happy that he was in Vrindavan Dham. He had given up all of his foolish ideas. He wanted to spend the balance of his life simply loving and serving the Lord. तो वो बहुत खुश थे कि उनका जो जीवन व्यर्थ हुआ था अभी उसको फिर से ठीक करने का समय आ गया था और भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त कर सकते थे। So
Prabhupada says, so these are the facilities for Krishna consciousness. That Krishna will come and give his devotee another chance to serve and love. ये कृष्ण भावना की एक सुविधा है कि भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं और अपने भक्त को फिर से प्रेम और सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। And then Prabhupada says, and this is the only business one should take. Only business is to serve and love Krishna. No other business. और श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि हर व्यक्ति को केवल यही कार्य करना चाहिए कि भगवान कृष्ण को प्रेम करना और उनकी सेवा करना, इसके अलावा और कोई कार्य नहीं करना। All other things simply wasting the time. इसके अलावा जो वस्तुएं हैं वो केवल समय का व्यर्थ उपयोग। Wasting the time instead of serving Krishna is the most foolish thing a person could do. भगवान कृष्ण की सेवा करने की बजाय समय को व्यर्थ गंवाना एक सबसे बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य है। Therefore, utsaham nischaya darya. All of us should be very enthusiastic, very determined, and also we have to, what is that? Be patient. Yeah, patient. We have to also be patient. All three things we have to do if we're going to make actual progress to go back to God. अगर हम भगवत धाम जाने के लिए वास्तविक प्रगति करना चाहते हैं तो ये तीनों वस्तुएं हमारे पास होनी चाहिए: उत्साह, निश्चय और धैर्य। So Prabhupada says, so that is the instruction of Narada. तो ये नारद मुनि का निर्देश है। Narada is the spiritual master of the whole Vaishnava sect. नारद मुनि पूरे वैष्णव संप्रदायों के गुरु हैं। So he's giving the right direction by saying, don't try for anything else. तो नारद मुनि इसीलिए बता रहे हैं कि इसके अलावा और किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। Don't think that you become happy in this material world. ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस भौतिक संसार में सुखी हो जाएंगे। This way or that way. Don't think you'll be happy. कैसे भी करके ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस संसार में सुखी हो जाएंगे। Whatever happiness or distress comes, it comes of its own accord. जो भी सुख या दुख आता है वो स्वयं इस हमें प्राप्त होता है। Prabhupada says nobody expects a calamity or any distress. Nobody thinks like that that bad thing will happen to them. प्रभुपाद जी कहते हैं कि संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है कि उसके साथ कुछ खराब होगा। Prabhupada says, but sometimes calamity overcomes us. परंतु कभी-कभी जो दुख है वो हमारे ऊपर आ जाता है। So Prabhupada says, similarly, you should not, I mean to say, try for any artificial happiness. Don't try for that. इसीलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमको किसी भी Artificial happiness. Don't try for सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। Don't try for artificial happiness. You have to find real happiness. And real happiness is in praying. It is in preeti, loving God. हमें वास्तविक सुख के लिए प्रयास करना चाहिए। वास्तविक सुख भगवान को प्रेम करने में होता है। So Prabhupada says, whatever Krishna gives you, you be satisfied. प्रभुपाद जी बताते हैं जो भी कृष्ण हमें देते हैं उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। What he is saying is don't be greedy. Just try to love Krishna. Don't be greedy for material things. They will simply destroy your creeper of love. भौतिक वस्तुओं के लिए बहुत ज़्यादा लोभ नहीं होना चाहिए क्योंकि भौतिक वस्तुएं हमारे कृष्ण प्रेम को खत्म कर सकती हैं, विनाश कर सकती हैं। And Prabhupada is saying here about this country, India, Punya Bhumi. He says that was the basic principle of the whole Vedic civilization. प्रभुपाद जी इस भारत पुण्य भूमि के बारे में बताते हैं कि यही सिद्धांत पूरे वैदिक समाज का है। That was the consciousness of everyone in this wonderful land of India because they were agreeing, okay, whatever I'm given, I'll be satisfied, I'll be happy, fine. इस पुण्य भूमि भारत में रहने वाले सभी लोगों का यही चेतना था कि मुझे जो भी मिलता है उसमें मुझे संतुष्ट रहना है। So this shloka that we're reading from today in Bhagavatam, Prabhupada is quoting it now. Srimad Bhagavatam 1.5.18.
ये जो श्लोक हम श्रीमद् भागवत में पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद उसी श्लोक के बारे में बताते हैं। पहला इसका है, पांचवां आता है। This is this sloka, Tishaya Vaheto Prayate Kovido. We just chanted that. So here's I'll read it one more time, and maybe Prabhuji, you can do a portion of it at a time. Prabhupada says, persons who are actually intelligent and philosophically inclined. जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्वज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, they should endeavor only for that purposeful end which is not obtainable even from wandering from the topmost planet Brahmaloka down to Patala. उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं है। As far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, it can be obtained automatically in due course of time. यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार Just as in course of time we obtain miseries, जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी हमें दुख मिलते रहते हैं, even though we do not desire it. यद्यपि हम उनकी इच्छा नहीं करते हैं तब भी। So again, this is from Narada Muni speaking this to Vyasadeva. ये नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं। So Prabhupada goes on. He's talking about Vedic culture, spiritual culture. Prabhupada says nobody, we mean more or less India, because India is the most spiritualized country in planet Earth. So Prabhupada says nobody was trying to make any artificial economic development. वैदिक संस्कृति के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि वैदिक संस्कृति में कोई व्यक्ति भौतिक लाभ के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करते थे। Prabhupada says no, the whole history of India is like that. भारत का पूरा इतिहास इसी तरह से है। So he's saying that in a spiritual culture here in India, he's saying that the people in this world were satisfied with whatever was given to them. Even if it was not very small amount of money or small amount of food, still they go on happily serving the Lord. तो भारत के इस आध्यात्मिक संस्कृति में सभी लोग इस तरह से थे कि उनको जो भी भगवान के द्वारा दिया जाता था उसमें वो सुखी रहते थे और संतुष्ट रहते थे, चाहे वो कितना भी कम हो। Basically what Prabhupada was saying, that people in India were not greedy people. They took whatever the Lord gave them happily. प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि भारत के जो लोग थे वो लोभी नहीं थे, वो भगवान के द्वारा दी हुई सारी वस्तुओं से संतुष्ट थे। And Prabhupada said, they were satisfied. The people in India, they were satisfied. भारत के लोग जो हैं वो संतुष्ट हैं। All right, Krishna's arrangement. ये कृष्ण का व्यवस्था है। That means they were not upset that they didn't get what they want. Oh, okay. Krishna has arranged. Okay, fine, no problem. तो वो इसलिए दुखी और क्रुद्ध नहीं थे और ये सोचते थे कि ठीक है, कृष्ण ने हमें दिया है तो ठीक है। Prabhupada says, even now, the mass of people in 1942 in India, there was big famine. प्रभुपाद बताते हैं कि अभी भी 1942 में भारत में एक बहुत बड़ा दुर्भिक्ष हुआ था। Famine means some very bad thing happened. Many people die in famines. इसको अकाल बोला जाता है, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। So many people were dying in India in 1942. 1942 में भारत में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी। And yet these people, they were saying, they were still, their attitude was still, okay, all right, Krishna has given us, God has given us, okay, fine. उसके बाद भी सभी लोगों का स्वभाव इस तरह से था कि वो सोच रहे थे कि भगवान ने जो भी दिया है ठीक है। We all know in Bhagavad Gita, calm, crowed, and low, lust, anger, and greed. This is what keeps everyone sent down to Nara. They have to take some hellish birth. So in this particular case, the Indian people were not like that. They were not filled with calm, crowed, and low. They were happy, just living and
trying to love and serve Krishna. तो भगवद गीता में बताते हैं कि काम क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं, उसके द्वारा लोग नरक में अलग अलग बुरी योनियां प्राप्त करते हैं। और इस अवस्था में हम देखते हैं कि भारत के लोग काम क्रोध और लोभी नहीं थे, वो भगवान की भक्ति में प्रसन्न थे और संतुष्ट थे। So Prabhupada said that was the mentality of the people, very willing to accept whatever comes to them, good or bad, they accept it all. तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि ये लोगों का स्वभाव था उस समय कि जो भी अच्छा या बुरा जो भी होगा उसको स्वीकार कर लेंगे। So now Prabhupada says, most important sentence, so our main business is how to improve our Krishna consciousness. इसके बाद प्रभुपाद ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि कैसे हम अपनी कृष्ण भक्ति को बढ़ा सकें। He made it very clear, main business, that is really what our life is for. Every jiva's life is to satisfy Krishna. तो प्रभुपाद स्पष्ट शब्दों में यहाँ बताते हैं कि हमारा मुख्य लक्ष्य है कृष्ण को प्राप्त, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना, सारे जीवों का यही लक्ष्य है। In Bhagavad Gita, chapter 4, text 35, भगवद गीता चतुर्थ अध्याय 35वें श्लोक में there's 2 paragraphs. In that lower paragraph, there's one sentence that is 7 words. One sentence, only 7 words. उसके 35वें श्लोक के तात्पर्य में 2 पैराग्राफ हैं, उसमें से एक जगह पे एक वाक्य है जिसमें 7 शब्द हैं। In that chapter 4, text 35, this 7-word sentence is very important for all of us to always think about. इस 35वें श्लोक में ये 7 शब्दों का एक वाक्य हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा ध्यान रखने के लिए। It is a short sentence, but it is very powerful and very meaningful. ये बहुत छोटा सा वाक्य है परंतु बहुत शक्तिशाली है और उसमें बहुत अर्थ छुपा हुआ है। Prabhupada wrote that sentence with only 7 words. प्रभुपाद ने उस वाक्य को केवल 7 शब्दों के द्वारा लिखा। We are all meant to satisfy Krishna. हम सभी कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए बने हुए हैं। If you don't have a pad or paper, write this down. We are all meant to satisfy Krishna. This is the purpose of the jiva. His purpose in life is to satisfy Krishna's senses. यदि आपके पास पेन और पेपर है तो इसको लिख सकते हैं कि हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए ही बने हैं। ये सारे जीवों का परम लक्ष्य है। So Prabhupada says, we should not divert our attention in any other material condition of improvement. Don't chase after trying to find this kind of improvement or that kind of improvement. Don't chase after that. प्रभुपाद बताते हैं कि हमें अपना ध्यान किसी भी दूसरी भौतिक सुविधाओं को बढ़ाने में नहीं लगाना चाहिए, किसी भी जगह अलग अलग सुविधाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। So many people are thinking, oh, I must have better clothes. I want some very fancy clothes. I want a beautiful, big, expensive car. And I want a gigantic bungalow. So many desires are there. सभी बहुत सारे लोग अलग अलग वस्तुएं चाहते हैं कि उनको अच्छे कपड़े पहनने के लिए मिलना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी कार होनी चाहिए, बड़े बड़े घर होने चाहिए। बहुत सारी ऐसी भौतिक इच्छाएं लोगों को होती हैं। What are these kind of people doing? Why are they doing this? ऐसे लोग क्या कर रहे हैं और क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? They think their life will be improved by having all of these things. वो सोचते हैं कि उनका जीवन ये सब वस्तुएं प्राप्त करने के बाद सुखी हो जाएगा। A house is the thing. A car is a thing. Clothes are a thing. Shoes are just a thing. They're just some materialistic thing. हमारा घर, कार, कपड़े, जूते, ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। So Prabhupada is saying, don't divert our attention for any other material condition of improvement. श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें अपना ध्यान किसी भी भौतिक सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए नहीं लगाना चाहिए। Then Prabhupada says, that is actually not improvement. जो ऐसा प्रयास करते हैं वो वास्तविकता में प्रगति नहीं है। Think about this. Prabhupada is saying like this, that
We should not divert our attention to these material condition of improvement. And Prabhupada says, this so-called condition of improvement, Prabhupada says, that is actually not improvement. तो भौतिक प्रगति के लिए हमें अपना ध्यान उसकी तरफ नहीं भटकाना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में भौतिक प्रगति है ही नहीं। People are thinking when they buy a car, oh look, I've improved so much, my car, everyone is really looking at how beautiful my car is. This is all foolishness, complete foolishness. लोग सोचते हैं कि जब वो कार खरीदेंगे तो वो बहुत उन्नति कर लेंगे और लोगों को लगेगा कि उनका जीवन बहुत उन्नत हो गया है, परंतु ये एक मूर्खतापूर्ण बात है। So Prabhupada says it is simply illusion. तो बात बता रहे हैं कि ये केवल एक भ्रम है। And what is that illusion? और ये भ्रम क्या है? Oh, I am making improvement. ये भ्रम है कि मैं प्रगति कर रहा हूँ। Prabhupada said, what improvement? Question mark. What improvement you are making? Question mark. प्रभुपाद बोलते हैं क्या आप प्रगति कर रहे हैं? Prabhupada says, suppose you are earning now, let's say $500 per month you're earning. ठीक है, प्रभुपाद बताते हैं कि आप अभी एक महीने में $500 कमाते हैं। So Prabhupada says, so if you earn say $5 million, so then what? तो अगर $500 की जगह आप $5 करोड़ की कमाते हैं तो उससे क्या होगा? Prabhupada said, will you eat more than 4 chapatis? क्या आप 4 चपाती से ज़्यादा खा पाएंगे? No. Prabhupada says, no. You will eat the same 4 chapatis. उस अवस्था में भी आप केवल 4 चपाती ही खाएंगे। And you'll occupy the same 6-foot bed. Same 6-foot bed. He says you will. और आप सोने के लिए भी उसी तरीके का 6 फीट का एक बिस्तर प्राप्त करेंगे। Then Prabhupada says you may acquire the whole property of the state of West Virginia. West Virginia is one state in USA. हो सकता है वेस्ट वर्जीनिया जो एक राज्य है वहाँ की सारी संपत्ति आपको मिल जाए। But even if you acquire that whole state, you'll still have to lie down on the 6-foot bed. अगर आप पूरा राज्य भी आपके पास आ जाएगा तब भी आपको एक 6 फीट का बिस्तर ही आवश्यक होगा। Prabhupada said that's all. बस उसी की जरूरत है। You'll have to eat 4 chapatis. आपको 4 चपाती खाना है। So this is all Maya. ये सब कुछ माया है। It is Maya because we are greedy with lust, anger, and greed, काम, क्रोध, and लोभ. ये माया है क्योंकि हम काम, क्रोध और लोभ के द्वारा प्रभावित हैं। People think I will go to Swargalok, I will enjoy so much beautiful women and ladies and so many things, so much wonderful food. I will really be happy. But you won't stay there. You'll stay for some time. When your karma is run out, you have to fall back down again. लोग सोचते हैं कि वो स्वर्ग जाएंगे तो बहुत खुशी रहेंगे, बहुत सुंदर स्त्रियां, बहुत सुविधाएं प्राप्त होंगी, परंतु ये भ्रम है क्योंकि हम वहाँ पे हमेशा नहीं रह पाएंगे। जब हमारे पुण्य कर्म खर्च हो जाएंगे तो हमें फिर से वापस आना पड़ेगा। So Prabhupada says, that's why he says, so this is just Maya. तो ये केवल माया है। Oh, I am improving. Prabhupada says, that is just Maya. ये सोचना कि मैं बहुत प्रगति कर रहा हूँ, ये एक माया है। Then Prabhupada says, so what you are improving? What are you improving? तो बात पूछते हैं आप क्या प्रगति कर रहे हैं? He said, you will not be any taller. आप ज़्यादा लंबे तो नहीं हो जाएंगे। Does anyone automatically becomes taller somehow because you're trying to improve? No. क्या कभी ऐसा होता है कि कोई प्रगति करना चाहता है तो एकाएक लंबा हो जाता है? You'll not be a great eater. Nothing of the sort. You'll not be a great eater. Someone who eats so much. ज़्यादा खाने भी नहीं लगेंगे। Whatever you have already, you'll have the same thing. अभी जो आपके पास है, आपके पास वही रहेगा। You see, brother, with a question mark. You see, you won't benefit by trying to improve your situation in the material world. You will not actually benefit. इस भौतिक संसार में अपनी उन्नति को बढ़ा के आप वास्तविकता में कभी भी लाभ को प्राप्त नहीं करेंगे। So Narada Muni says, you just try to describe the glories of Krishna. तो नारद मुनि कहते हैं कि आपको केवल भगवान कृष्ण की प्रशंसा को बताना चाहिए।
then the question may be, well, then how shall I glorify Krishna? How shall I glorify him? तो ये प्रश्न आ सकता है कि मैं कैसे कृष्ण की प्रशंसा करूंगा? So Narada says, Idam hi vishvam bhagavani vedhara. You study everything and see how all things are connected with Krishna. तो नारद जी उसका उत्तर देते हैं कि आप इस संसार की सारी वस्तुओं को पढ़िए और उसको इस तरीके से विश्लेषण करिए कि कैसे वो भगवान कृष्ण से संबंधित है। This is a very important point that Prabhupada is making. प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बता रहे हैं। Prabhupada says that this is the definition. Idam hi vishvam bhagavani vedhara. You study everything and see how all things are connected with Krishna. ये इस श्लोक की परिभाषा है कि प्रभुपाद बताते हैं कि आप इस संसार में सब वस्तुओं का निरीक्षण करिए और ये पता करिए कि कैसे वो भगवान कृष्ण से संबंधित है। It is a fact that Krishna is the source of everything. ये वास्तविकता है कि कृष्ण सारी वस्तुएं कृष्ण से निकलती हैं। We all know that. हम सभी इसको जानते हैं। Eko bahunam yo vidadati kama. We know this shloka that the Supreme Person, he is supplying the necessities of life to everyone. ये श्लोक हम जानते हैं कि जो पूर्ण भगवान है वो सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। So how do we get all of that? Because Krishna provides to all of the praja, to all the living beings. हम कैसे इन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं? क्योंकि कृष्ण इन वस्तुओं को हमें प्रदान करते हैं। So Prabhupada says, try to understand that this material world, this cosmic manifestation, it is Krishna's energy. ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये पूरा संसार भगवान कृष्ण की ऊर्जा है। We all know that. Panchbhut, we all know in the 7th canto of Bhagavad Gita. Earth, water, fire, air, space. These 5 elements. Krishna has provided them. भगवद गीता सप्तम अध्याय से हम सभी जानते हैं पंच महाभूत भूमि जल अग्नि वायु आकाश। Those 5 elements Krishna has provided for all of the living beings here in this material world so they can exploit and try to enjoy independently. Because they turn their back on Krishna, they think, I don't need any Krishna. I just want to have happiness in my life. I want to have sense gratification. I want to enjoy myself in this world. ये 5 तत्व भगवान कृष्ण के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं क्योंकि हम भगवान कृष्ण के सम्मुख नहीं रहते हैं तो हम कृष्ण को अपने जीवन में नहीं चाहते हैं और हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से सुखों का भोग करेंगे और भगवान कृष्ण से स्वतंत्र रहेंगे। So Prabhupada says, try to preach and teach the people in general that everything belongs to Krishna. प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सभी को ये बताना चाहिए, बताने का प्रयास करना चाहिए और प्रचार करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण की हैं। Everything is a manifestation of Krishna's energy. संसार की सभी वस्तुएं भगवान कृष्ण की शक्ति से उत्पन्न हैं। So these 2 things, Prabhupada says, try to preach and teach people in general that everything belongs to Krishna. That's a fact. Every single thing belongs to Krishna. प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि लोगों को ये शिक्षण देना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण की हैं। And everything that exists is a manifestation of Krishna's energy. और इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो भगवान कृष्ण की शक्ति से प्राप्त हैं। Krishna is so full that even when Krishna expands millions of times, still he remains Krishna, the original person. कृष्ण अपने आप में पूर्ण है, इसलिए उनके पास से इतनी वस्तुएं निकलने के बाद भी वो सदैव स्वयं कृष्ण रूप में रहते हैं। So everything has manifested from Krishna. सारी वस्तुएं कृष्ण से ही निकल रही हैं। How is that possible? Because Krishna is Adi Purusha. He is the original person. ये कैसे संभव है? Yes, क्योंकि भगवान कृष्ण ही आदि पुरुष हैं। And his abilities are unlimited. उनकी क्षमताएं अभूतपूर्व हैं। That is Lord Krishna. ये भगवान कृष्ण है।
This morning while walking, this is Prabhupada speaking. This morning while walking, I was talking to Devananda, one of his disciples. प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आज सुबह वो अपने एक शिष्य देवकांत से बात कर रहे थे. So Prabhupada was talking with his disciple about how Krishna expands, how all of these things come from Krishna. प्रभुपाद जी अपने शिष्य से ये बातचीत कर रहे थे कि कैसे कृष्ण सारी वस्तुएं कृष्ण से उद्भूत होती हैं. Prabhupada said this is a common sense affair, very common sense thing. प्रभुपाद बताते हैं ये तो एक सामान्य तर्क के जैसा है. Then Prabhupada describes, just like a small, very small seed inside a fruit. प्रभुपाद जी समझाते हैं जैसे एक फल के अंदर बहुत छोटा सा बीज होता है. And that seed, you sow that seed. You take the seed out of the fruit and you sow it in the ground, and what happens? That little, small, little thing inside the seed becomes a big, big, big tree. तो हम अगर उस फल में से एक बीज निकालते हैं, उस बीज को भूमि पे लगाते हैं, तो उस बीज में से एक बहुत बड़ा वृक्ष निकल के आता है. And from that big tree, again, so many more fruits will come out. और उस बहुत बड़े वृक्ष में से बहुत सारे फल फिर से निकल के आते हैं. And again, from all of these fruits, so many millions of trees will come out. और उन फल में से फिर से बहुत सारे वृक्ष निकल के आते हैं. So now we can see the potency of Krishna. तो अब हम देख सकते हैं भगवान कृष्ण की शक्ति कितनी है. Even in this material existence, इस भौतिक संसार के अंदर भी we see so many potencies in everything. हम सारी वस्तुओं के अंदर कितनी सारी शक्तियाँ देखते हैं. All of these potencies are coming from Krishna. ये सारी शक्तियाँ कृष्ण से आती हैं. Parashya Shaktir Vidadaya Shruyate. We all know that sloka. We all see the sunshine. हम सभी लोग सूर्य की रोशनी को देखते हैं. We see the potency of the sun because the sunshine is coming out of the sun. उससे हम सूर्य की शक्ति को देखते हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी सूर्य से ही निकल रही है. The sunshine is spread all over. सूर्य की रोशनी हर जगह फैली हुई है. And everything is existing on the sunshine. और सारी वस्तुएं सूर्य की रोशनी के ऊपर आश्रित हैं. Even the sunshine has got so much potency सूर्य की रोशनी में भी कितनी शक्ति है. that we can all experience daily. We can see the sun rays coming in all directions. That is energy coming from Krishna. ये हम अपने सामान्य अनुभव में भी देख सकते हैं कि सूर्य की रोशनी पूरे संसार में चलती है और ये भगवान कृष्ण से आती है. So Prabhupada says this last few lines, and just imagine how much potency Krishna has. तो यदि सूर्य की रोशनी में इतना शक्ति है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण में कितनी शक्ति होगी. He is the creator of the sun. Just think how much potency Krishna has. वो सूर्य के को भी बनाने वाले हैं तो उससे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण में कितनी शक्ति होगी. Yakshakshir Savita Gurnanam Raja Samasta Suramurtira Teja. Prabhupada quotes that sloka from our Shastra. So Prabhupada says, so we have to study like that, everything. We have to study everything to see how it is coming from Krishna. तो इस तरह हमें सारी वस्तुएं देखना होगा कि कैसे वो कृष्ण से आ रही है. Everything is Krishna's expansion. सब भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं. Just like the fire, जैसे अग्नि, the heat will spread and be experienced throughout the entire house. जैसे अग्नि से ऊष्मा निकलती है और वो ऊष्मा पूरे घर में अनुभव की जा सकती है. It's a very simple example, but Prabhupada is making this point. You light some fire within inside the house, and then the heat will spread all around through the house, and everyone can be comfortable. ये बहुत आसान उदाहरण है. प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि आप अपने घर में भी अग्नि को जलाएंगे तो अग्नि से जो ऊष्मा निकलती है वो ऊष्मा पूरे घर में चली जाती है. So the last two sentences, Prabhupada says, similarly, Krishna
although he is the supreme person enjoying in the Lok Vrindavan, यद्यपि भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं और गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, by his energy, he is expanding everywhere. अपनी शक्तियों के द्वारा वो हर जगह उपस्थित होते हैं। And Prabhupada says, this is the simple truth. ये एक सामान्य सत्य है। So this is a very nice slogan in Srimad Bhagavatam. तो ये श्रीमद् भागवतम का बहुत अच्छा श्लोक है। 1.5.18. We should study this प्रथम स्कंद पंचम अध्याय 18वां श्लोक, हमें इसको पढ़ना चाहिए। because Narada Muni is saying right in the translation. क्योंकि नारद मुनि अनुवाद नहीं कह रहे हैं। He's saying that persons who are actually intelligent and philosophically inclined ऐसे लोग जो बुद्धिमान और तत्वज्ञानी होते हैं, should endeavor only for that purposeful end, उनको केवल उस आध्यात्मिक सत्य के लिए प्रयास करना चाहिए, which is not obtainable even by wandering from the topmost planet Brahmaloka जो कि ब्रह्मलोक से down to the lowest planet Patal. ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक भ्रमण करने से भी प्राप्त नहीं हो सकता। This is such a beautiful sentence. ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सुंदर वाक्य है। Narada Muni is speaking so wonderfully because he's saying that if one is intelligent, able to analyze things properly, then he can understand that my happiness is not in this world of Janma, Mrityu, Jara, Vyadi. This is not the world where the jivas actually want to be. नारद मुनि यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा सुख जो है वो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाले संसार में नहीं है, और ये वास्तविकता है। Unfortunately, they decided on their own to enjoy separately from Krishna, and here they are in suffering conditions, life after life after life. दुर्भाग्यपूर्ण रूप से सभी ने इस तरह से निर्णय किया कि वो कृष्ण से स्वतंत्र होकर सुख भोगेंगे, और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे आके वो एक जीवन के बाद अगला जीवन को लगातार दुख की प्राप्ति कर रहे हैं। Also, we need to understand that I'm just going to make this one point, then I'm going to stop. We all have loving feelings for others. हमें ये समझना चाहिए कि हम सभी के पास प्रेममयी स्वभाव तो है। All of us have some family members somewhere. हम सभी के कोई ना कोई घर वाले हैं कहीं ना कहीं। Here in India, your family members are mostly living here, although maybe outside here or there, but we all over planet Earth, we all have what we call family members. भारत में आपके कुछ घर के लोग यहाँ रहते हैं, कुछ बाहर रहते हैं, बाकी पूरे संसार में हमारे पास कुछ ना कुछ परिवार वाले रहते हैं। Unfortunately, all over the world, the family members, they don't really give their heart to God, especially in Kali Yuga. They are simply trying to improve their material conditions in this world of birth and death. दुर्भाग्यवश ऐसा होता है इस संसार में कि लोग कृष्ण भक्ति के बारे में नहीं सोच के अपनी केवल भौतिक उन्नति के बारे में सोचते रहते हैं। So even all of us sitting here, we can give some names of our family members. You have Mata and Pita, you have Mama and Kaka, you have so many different names you all use. Aja, Aji, I don't know all of them, but there's a lot of them. So we all have some family members, all of us, some cousin brothers and maybe joint family. आप सभी लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, मुझे निश्चित है कि आप सभी के कुछ ना कुछ रिश्तेदार होंगे, मामा, मामी, काका, काकी, अलग-अलग रिश्तेदार होंगे। And we have some affection for our family members. Generally speaking, there's some affection there, some love is there, so-called love. We call so-called love, that is there. सामान्यतः हमें अपने घर वालों, परिवार वालों के लिए कुछ तो ऐसे दिखावटी प्रेम जैसा होता है। But we have to question ourselves, how long can we stay with our family members? How long can we stay in the relationship with our family members? How long can we keep feeling love with one another? How long can we do that? Only a short time. हमें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि कितने समय तक हम अपने घर वालों के साथ रह सकते हैं और उनके साथ सुख का अनुभव कर सकते हैं। बहुत कम समय के लिए। Hardly 100 years one can live in this body. This body is
First of all, this body is not a living thing. This body is not alive. Just like your motor car or your motorbike. The car and the motorbike, they're not alive. Actually, this building is not alive. This body is not alive. We are the jiva inside. ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक हम इस शरीर में रह सकते हैं और ये शरीर भी अपने आप में जीवित नहीं है। जैसे आपकी कार, मोटर कार और ये घर, ये बिल्डिंग जो है ये भी जीवित नहीं है, इस तरह से ये शरीर भी जीवित नहीं है। So this body will fall on the ground. It will not be useful at all. It will simply be laying on the ground getting rusty. ये शरीर एक समय आएगा जब शरीर जमीन पे गिर जाएगा और किसी भी कार्य का नहीं होगा। So when the soul leaves the body, in Bhagavad Gita chapter 15, Matam Smritir Jnanam Apohanam Cha. Apohanam means forgetfulness. जब आत्मा इस शरीर को त्याग करती है, भगवद गीता 15वें अध्याय 15वें श्लोक में लिखा है, मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च. अपोहनम means भगवान. As soon as the jiva departs from the body is laying on the ground, the jiva immediately forgets the family members, forgets any name that he had at one time given to him. He completely forgets everyone in the orbit of their family and friends. Completely forget immediately. जैसे ही व्यक्ति के शरीर खत्म होता है और आत्मा उससे निकल जाती है, तो आत्मा उस शरीर में उसका जो नाम था और उसके जो परिवार के लोग थे उन सभी को भूल जाती है. Those devotees, like all of you here, all of us are practicing devotional service. We're trying to love Krishna. We're bowing humbly before the Lord and trying to serve Him and His devotees. हम भगवान कृष्ण को विनम्रतापूर्वक उनके सामने झुक के उनकी सेवा करना और भक्तों की सेवा करना चाहते हैं. So many devotees will go back to Godhead in this lifetime. इसी जन्म में कई भक्त भगवान के नाम चले जाएंगे. Some may not make it all the way into Krishna Loki in this life, but they can continue where they left off, as we read in Bhagavad Gita. कुछ लोग हो सकता है इस जन्म में भगवान के पास नहीं जा पाए, परंतु वो जहाँ पे खत्म करेंगे वहाँ से फिर से प्रारंभ कर देंगे. But many of us have materialistic family members. तो हमारे बहुत सारे भौतिकतावादी घर के लोग भी हैं. It means that some of our family members are not interested in what we're doing, chanting Hare Krishna, bowing before the Lord. Many of them are not so much interested. हमारे घर में कई लोग इस तरह से हो सकते हैं कि जो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, नाम का जप कर रहे हैं, उसके लिए उनको कोई आकर्षण नहीं है. Of course, in Gujarat, so many people are Krishna bhaktas, so maybe there's many more here than some other places. तो गुजरात में ऐसा है यद्यपि कि बहुत कृष्ण भक्त हैं. But we will not be able to remain here. We'll have to either go back to Godhead or take another birth. परंतु हम यहाँ पे हमेशा नहीं रहेंगे. या तो हम भगवान के धाम जाना होगा, नहीं तो दूसरा जन्म प्राप्त करना होगा. Do you know what happens if you don't go back to Godhead in this life and you have to take another birth? You know what happens? तो आपको क्या पता है कि अगर आप भगवत धाम नहीं जाते हैं और आपको दूसरा जन्म लेना पड़ता है तो फिर क्या होगा? What happens? क्या होगा उसके? Mataji, what happens? Can you tell? Prabhus? Oh, I see two hands. What? Enter some other homes. Yeah, they'll have to enter another womb. That is correct. You'll have to enter another womb. Yes. हमें अगर हम प्रभु जी बता रहे हैं कि अगर हम भगवत धाम नहीं जाएंगे तो किसी दूसरे गर्भ में जन्म लेना होगा. That is correct, but it was a different point I was making. Yes, Prabhu. That's also in Bhagavad Gita. That same shloka is there. So yes, that's also true. But I have a different point in mind. प्रभु जी ने बताया कि या तो हम धनी घर में जन्म लेंगे या वैष्णव घर में. So what I'm going to tell you now is going to happen is that when you don't go back to God and you have to take another birth, once you take your birth, you have to go to school again. First standard, second standard, third standard, fourth standard, fifth standard. Who wants to do that? Raise your hand. You want to go to school next life all over again. Raise your hand. यदि हम भगवत धाम नहीं जाएंगे तो हमें फिर से अगली बार जन्म लेके फिर से स्कूल जाना होगा. पहली क्लास से दूसरी क्लास, 10वीं क्लास तक. कितने लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं फिर से? No one wants to do that all over again. कोई भी फिर से वो सब नहीं करना चाहता. Better to go back to Godhead soon, अच्छा not है, later. अच्छा है कि भगवान के धाम जल्दी चले जाएं. Srila Prabhupada ki Question, Maharaj. Prabhu, some question.
Question? Okay, I have a policy. If someone asks the question and it's a difficult question, I ask my putney to answer. If you have an easy question, I'll happily answer for you. What's your question? मैं हिंदी बोलता हूँ, प्रभु जी ट्रांसलेट करेंगे। बिलमंगल I will translate. He will speak in Hindi. I will translate. बिलमंगल ठाकुर ने जब घर छोड़कर वृंदावन गए तो अपने आप अंधा बन गए थे। Like this. He is asking when Mangal Thakur went to Vrindavan, so how he became blind. My recollection is that he saw some beautiful woman passing by. Mangal Prabhuji बता रहे हैं कि जब वो जा रहे थे तो उन्होंने एक सुंदर स्त्री को वहाँ से जाते हुए देखा. He saw some lovely woman dressed beautifully. Her form was gorgeous. Her hair was filled with beautiful flowers. And although he was in Vrindavan and he was wanting to serve Krishna, he became enamored by the beauty of this woman. And he realized what a fool I am. So he poked his eyes out with a stick. तो जब उन्होंने ये सुंदर स्त्री को देखा तो उनके मन में यद्यपि वो कृष्ण को प्रेम करने के लिए गए थे परंतु स्त्री की तरफ आकर्षित हुए. तो उसके बाद उनको बहुत खराब लगा कि उन्होंने इस तरह से क्यों किया. तो उसके कारण उन्होंने अपनी दोनों आँखों को खोल दिया. He still had some material desires, and when he saw the beautiful woman, those desires came up, and then he thought, oh, such a lovely woman. So then he started slapping himself. Oh, what a fool I am! So he poked his eyes out. तो उनके पास कुछ भौतिक इच्छाएं थी. तो जब उन्होंने उस सुंदर स्त्री को देखा तो भौतिक इच्छाएं फिर से जागृत हो गई. तो उसके बाद उनको लगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ और फिर उन्होंने अपनी आँखों को खोल दिया. Can you just speak to him? Yeah, I can just. Some people tell that story the same way almost, but they say that the woman, she had some pins in her hair, and he said, "Could I please use your pins?" And she said, "Why?" He said, "Just let me." Then he poked his eyes with those pins. I think that's correct. Tell. इस कहानी में एक इस तरह से आता है कि उस स्त्री ने अपने बाल में 2 पिन लगा के रखी थी. तो उन्होंने उससे 2 पिन मांगी कि मुझे वो पिन दे दीजिए और फिर वो दोनों पिन लेके उन्होंने उस दोनों पिन से अपनी आँखों को खोल दिया. Can I ask a question? Is it a hard question or an easy question? I don't know, because I don't know the answer. बिलमंगल ठाकुर हमारे ब्रह्मदेव गौड़िया संप्रदाय में आते हैं. Mangal Thakur is he the devotee in our Madhva Gaudiya Sampradaya? You know what? I don't exactly know myself. I need some real smart brahmana in the room here to please tell. I'm not exactly sure his We can do some research and find out. Maybe something. She will sit here for a long time and ask questions. I'm going to stop her soon. Okay. Christian was talking about how we need to be satisfied with whatever comes, and without separate endeavor, happiness and distress will automatically come because they're due to us, they're destined to us. It is our karma. तो हमें जो भी हमारा सुख या दुख है हमारे कर्मों के आधार पे हमें मिलेगा. इसलिए जो भी हमें मिलता है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए. So my question is, does that mean we don't have to work? मगर का एक प्रश्न है कि क्या इसका ये मतलब है कि हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं है? You have to answer that question. आपको उस प्रश्न का उत्तर देना होगा. So no, the answer is that we have to perform our duty according to our station in life, according to the body that we have. इसका उत्तर है कि हमें कार्य करना होगा. जो भी जिस प्रकार का शरीर हमें मिला है उसके आधार पर वो कर्तव्य हमें करना होगा. But just as Krishna said in Bhagavad Gita, you have a right to perform your prescribed duty, but not to be attached to the results.
जैसे भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि आपको अपना कर्म करने का अधिकार है, परंतु कर्म के फल से आसक्ति नहीं रख सकते। Nirmamo, nirahankara. That is in Bhagavad Gita. Nirmamo. Nothing is mine. Nothing belongs to me. Nirmamo. Nirahankara. I'm not desiring any kind of sense gratification. Sa shantyam adhigacchati. भगवद गीता में आता है निर्ममो निरहंकार सशांति अधिगच्छति। निर्मम मतलब कोई वस्तु, मैं किसी वस्तु से आसक्त नहीं हूँ, कोई वस्तु मेरी नहीं है, इस तरह से सोचना। I'm going to stop now. I think we're probably over time. Thank you very much for listening nicely. Hare Krishna. इसमें हरिपाद प्रभु की जय।